दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है उसमें एसबीआई ने अपनी जो डिटेल है, जो जितने भी बॉन्ड इशू किए थे उनका डिटेल, जिसने बॉन्ड खरीदा था उसका डिटेल और जिन्होंने उनको भुनवाया था उनका डिटेल इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और उसमें जो मेन चालाकी एसबीआई ने की है ताकि मिलान ना हो सके, वो उसने उसमें जो बॉन्ड का नंबर था वो मेंशन नहीं किया। और आज एक जो सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख का ऑर्डर था, सीजीआई ने उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट के लिए एक एप्लीकेशन मूव की थी, जिसकी आज सुनवाई वहाँ पर हुई। और इसमें क्या हुआ वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो चालाकी थी एसबीआई की वो आज उसका भी आज वो हो गया, उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आप इस चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। दोस्तों, एक लंबी वो थी, एक संघर्ष के बाद, कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद जो चीज़ राजनीतिक पार्टियां जो एक चंदा ले रही थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, गुप्त चंदा ले रही थी जिसका पता पब्लिक को नहीं चल पा रहा था और वो किस तरीके से किससे लिया जा रहा था इसका एक पर्दा नहीं उठ रहा था। तो वो कोर्ट के डिसीजन से, कोर्ट के आदेश से वो संभव हो पाया। फिर उसके बाद एसबीआई ने कोशिश की कि उसको 30 जून तक टाला जाए और उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। उसको भी खारिज करते हुए कोर्ट ने एसबीआई से 11 तारीख के आदेश में कहा था कि आप 12 की शाम तक उसको सबमिट करो, और एसबीआई ने उसको सबमिट किया। पर उसमें भी एसबीआई ने एक बहुत बड़ी चालाकी की, जो कि एक बैंकिंग सिस्टम का पार्ट होता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें एक जो यूनिक नंबर है, जो बॉन्ड का नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर जिसे कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेंज में देखा जा सकता है, वैसे नहीं देख सकते हो नॉर्मल अगर आप देखोगे। तो वो नंबर उसने नहीं दिया, उसका डिटेल नहीं दिया। जबकि जब उसने किसी ने भी बॉन्ड परचेज किया होगा तो एसबीआई ने उस बॉन्ड का नंबर ज़रूर नोट किया होगा, और जब जिसने भी उसको बनवाया होगा उसमें भी उसी नंबर के बेस पर भुना होगा। परंतु एसबीआई ने जानबूझकर, ताकि इनको लिंक नहीं किया जा सके किसने कौन सा बॉन्ड परचेज किया था और कौन सा बॉन्ड किसने भुनवाया, ये मिलान ना हो सके, ये बड़ी चालाकी से एसबीआई ने कोशिश की थी कि ताकि अगर कहीं पर कुछ गलत हुआ है या जनता को ये शो ना हो कि किसने कौन सा बॉन्ड किसको मिला, उस चीज़ को एक गुप्त रखने की कोशिश की गई थी। और ये बहुत बड़ा वो था, घोल किया गया था बचाने के लिए जिसने भी गलत तरीके से चंदा लिया था, चाहे वो कोई भी पार्टी थी या कोई भी देने वाला था। जो परचेजर था जिसने बॉन्ड परचेज करके राजनीतिक दल को दिया था, तो जिस दल को दिया था उससे उसे क्या लाभ मिला और क्यों, किसने दिया, किसको दिया, किसने, ये लिंक करना बड़ा मुश्किल हो जाए, इसलिए उन्होंने वो नंबर नहीं दिया या स्टेटमेंट मांगते हैं तो उसमें लिखा होता है कि चेक का नंबर दिया जाता है और वो किस डेट को क्लियर हुआ, किस पार्टी के खाते में गया, वो सारा डिटेल आता है। एक बैंकिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो उनका अपना नंबर होता है, या हमारे उसमें कोई आया है तो किस चेक नंबर से आया है, किस बैंक से आया है और किसने दिया है, सारी डिटेल आती है। परंतु इसी चीज़ को एसबीआई, जो कि एक मास्टर है, जो प्रमुख बैंक है देश का, उसने जब पूरा सिस्टम में एक ऐसा फजीयत कराई कि वही चीज़ नहीं दी जो बैंकिंग का पार्ट है। तो संयोगवश सीजीआई के एप्लीकेशन पर आज सुनवाई थी कोर्ट में, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो ऑर्डर है कोर्ट का उसमें इस छोटा सा अमेंडमेंट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में, और उस पर क्या निर्णय हुआ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। This is an application which has been moved by the Election Commission of India. This is for a minor modification. Because that directed the data which was submitted before this honorable court by 2 orders in the sealed envelope. Because the impression perhaps was that one of the copy of that data is with commission, but presume that you would have retained a copy of what you had submitted in the court. It was supposed to be in seal cover, taking the information from the political party. So we just submitted as it is. We got not. So the entire data is with this honorable court. So what we could do is we will ask our office to scan and digitize the data which has been submitted to us. It might just take a day or so, I think, because they'll start doing it immediately. That can be postponed once they're putting it up on the website. Then we'll say that as soon as the data which is available with us is scanned and digitized, that will be handed over to the originals will be returned to the election commission. इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है राजनीतिक पार्टी से, जो उनको डिटेल मिली थी चंदे की, तो वो उन्होंने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में जमा कर दी थी,
तो उसकी कॉपी उनको चाहिए। ये रिक्वेस्ट CEC ने कोर्ट को की थी और उसकी सुनवाई आज हो रही है। तो उसमें वही कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में वो सबमिट कर दी थी, जबकि जज साहब ने कहा उनको कि आपके पास होना चाहिए। तो वकील थे, उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हमको सीलबंद लिफाफे में मिला और वही सीलबंद लिफाफा हमने कोर्ट में जमा कर दिया, इसलिए उन्होंने उसके लिए रिक्वेस्ट की है और कोर्ट ने भी उसमें एग्री हो गया कि ठीक है, हम अपने जो कोर्ट का स्टाफ है उनसे कहेंगे कि वो आपको उसको स्कैन करके उसके डिजिटल फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे, ये उन्होंने कहा। And they will then immediately, they'll immediately apply. That's fair enough. No, the lordships indicated also on the last occasion. Now, just one thing, who's appearing for the State Bank of India? Because in our judgment, we had directed disclosure specifically of all details of the That's bonds, right. including the purchaser, the amount, and the date of purchase. They have not disclosed the bond numbers because That's that correct. had to be disclosed by the State Bank of India. Because if you see our judgment, Lordship's judgment is quite clear on that. All details. so all details have to be furnished by the State Bank of India. I am for the government. And they had said in their own application that they have the bond numbers, etc. But they said that they were in two different silos. That's right. The SBI's application for extension was on the ground. SBI is not a party. They were here because they moved an application. सुनवाई के दौरान ADR के वकील प्रशांत भूषण एवं कपिल सिब्बल ने ये कहा कि इसमें SBI ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया है, जबकि ऑर्डर जो हुआ है उसको की पूरी डिटेल देने के लिए कहा गया है। और दूसरी ओर SBI ने खुद कहा है कि हमें इनके मिलान करने में, इन बॉन्ड नंबरों को मिलान करने में वक्त लगेगा। इसी बेस पे वो 30 जून का समय मांग रहा था और वही उसने नहीं दिया। इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए ECI वकील ने कहा कि जो आज ये है, यह SBI की तरफ से केस नहीं है। Now, anyway, if they disclose the bond number, we have no problem with it. Lordships may issue That's notice to SBI, Manoj. Yes. My lord, may I mention, my lord? Lordships may issue notice to SBI, Manoj. No, that don't. An I am application, requesting the honorable court. an application has been filed by the Election Commission of India seeking further directions. Stop. In the judgment, in the order of this court dated, what is it? 11th of March 11 March 2024. 2024. This court had directed that the Election Commission of India, that ECI, shall upload on its website the data which was furnished to this court and which was being maintained in the custody of this court. So while issuing this direction, the court had presumed that a copy of the data which was lodged before this court, before the registry of this court, would be available with the ECI. Mr. Amit Sharma, learned counsel appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. Full stop. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Kapil Sibal or Mr. Senior Counsel or Mr. Prashant Bhushan, Learned Counsel. Mr. Vijay Hansaya will be so. Full stop. We accordingly issue the following directions: (bracket 1). The Registrar Judicial of this court shall ensure that the data which has been filed by ECI in pursuance of the interim orders of this court is scanned and digitized. Full stop. Upon the process being complete, this may be preferably carried out during the course. It may be carried by during the course of the day tomorrow, by 5 p.m. tomorrow. Full stop. Once the above exercise is completed, the original shall be returned to Mr. Amit Sharma, then counsel appearing on behalf of the ECI. Full stop. ECI shall then upload the data on its website within a period of on or before, day after. A copy of the digitized may also be given, so it will not take time in A copy of the, yes, fair enough. A copy of the scanned and digitized files shall also be made available to Mr. Amit Sharma so as to obviate the replication of the process of scanning and digitization. So we'll pass another order. We'll say, Would your lordships consider issuing notice to SBI? They may have something to say.
By the way, they should be here when the matter is going on. If they're not I'm here, sorry, why- my lord. Please. Look, they filed an application which is disposed of. They are not parties. But really speaking, we can take exception to what they have disclosed because they were bound, duty bound. I'm not appearing for SBI. The way- But your Court can pass an order. Your lordships may hear. I'm not here, my lord, for political. someone- correct. What is the operative direction in clause? My lord, may I mention, my lord? Here it is. Yeah, It says operate- SBI shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of the court dated 12th February till date to the ECI. The details shall include the date of the purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. Shall include, it doesn't mean it will exclude. SBI. Your lordship's order is clear. What your lordship's meant, my lord. Allow me, sir. Allow me. SBI shall submit the details of political parties which have received contributions to electoral bonds since the interim order of the court dated 12th April till the date of the ECI. SBI must disclose details of each electoral bond, details encashed by political parties, which shall include the date of the encashment and the denomination of the bond. So this is an inclusive order. It shall include all details. Lord, so would your lordships see? BNC. And your lordship had said that the reason, B and C of your lordship's original. I'm not appearing, I'm assisting. I feel, my lord, SBI needs to be. The order of this court, the judgment of the Constitution bench required SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds purchased and as the case may be purchased or as the case may be redeemed by political parties, including the date of purchase. What are the other? yes, Date of Your purchase. lordship's name of B and C purchase, for my satisfaction. Name of purchaser. Purchase which have received, sorry. and the The denomination. denomination. Date of purchase, name of the name of the purchaser and purchaser, denomination. and the date of purchase / redemption. Full stop. It has been pointed out, it has been submitted that SBI has not disclosed the electoral bond Number. the electoral bond number. What is it called? Is it called the unique identification number or is it called the? It's called the unique alphanumeric number on each bond. The alphanumeric number of the electoral bonds. Full stop. The Solicitor General submits that since he is not appearing for the SBI, a notice may be issued to SBI. Full stop. We direct the registry to issue notice to SBI, returnable on Monday. We'll keep it on Monday. Very well. Deeply obliged. Would like to. A copy. My lord, may I? Just a moment. Don't interfere. Ji. A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the standing counsel appearing for SBI. May I request, my lord, one thing? On Mr. Kapoor. Sanjay Kapoor. Lord, may I request, your lordships are keeping this on Monday. We are guests among us. This mentioning can wait, my lord, till Monday. I hope, my lord, I can convey myself. There we agree with source. एसबीआई द्वारा उपलब्ध करा गए डाटा पर बहस कराने पर यद्यपि ईसीआई वकील ने अपनी आपत्ति दर्ज करने की बार बार कोशिश की, फिर भी एडीआर के वकीलों ने जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखा। अपने निर्णय में सीजीआई ने कल शाम 5 बजे तक यानी 16 तारीख के शाम 5 बजे तक सारे डाटा जो सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध हैं वो ईसीआई को देने के लिए कहा तथा एसबीआई को नोटिस देकर उससे पूर्ण डिटेल मंडे तक देने के लिए कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।